हेलो, वेलकम बैक इन द पाइथन फंक्शंस। हम आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। और भी सारी चीज़ें देखेंगे, बट इन लास्ट वी हैव टू कवर ऑल द प्रोग्राम्स, राइट। देन लेट्स स्टार्ट द फंक्शंस। डेफिनेशन क्या है? द reusable block of code that performs a specific task. Functions help organize code, avoid repetitions, and make programs model. What does they do is, if there is an vending machine, अगर हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है, मान लो हमने उसको इनपुट दिया, जो भी हमने उसको इनपुट दिया, फिर वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, राइट, और हमें आउटपुट देगा। हमने उससे कुछ प्रोडक्ट मांगा, फिर वहाँ वहाँ पर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा हमको, राइट। सो तो पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूट करता है उस जो भी इनपुट दिया है यूज़र ने, फिर हमको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, राइट। सो फॉर दैट देर इज़ अ डिफरेंट सिंटैक्स फॉर द इंटरप्रेटर। सबसे पहला जो सिंटैक्स है, डिफाइन फंक्शन। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहला डिफ कीवर्ड यूज़ होता है। देन इट कम्स टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर्स which keeps the values. The values are called arguments, right? So जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो आप उसको कॉल करना चाहिए या फिर रिटर्न करना, राइट। देन इफ़ यू डोंट कॉल द फंक्शन, देन देर विल बी नो आउटपुट, right? So for that, the calling of the function is very important. So how to call the function? So here is a message, and here is function and string. So if we have to print this message, then this function, what does it do? It has this parameter, right? So it gives output. If suppose I have defined here function, right, different function, I will take different function. Let's suppose I'll take here name. Okay, wait, name. So def great. Alias. Then we have to call this function, right? So I'm taking an example. You can write here print or anything, and then we have to call it like this way using this function. This is called as calling the function. So इसके लिए की पॉइंट्स जो है हमारे पास, सबसे पहले डेफ जो एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, फिर जो फंक्शन नेम जो है होना चाहिए हमारा स्नैक केस में होना चाहिए, राइट, यानी कि अंडरस्कोर लगाना चाहिए इसमें। फिर जो भी हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या फिर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो फिर हम उसमें वाइड लिख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कम्स इज द डेफिनेशन। हियर इज एग्जांपल हियर, creating a function add, then it returns a plus b, that is output some, and we can add the values by calling the function, right. सो हमने यहाँ पर ऐड किए तो वैल्यूज़, इसने रिजल्ट दे दिया हमें। फिर फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट टू, यस, व्हाई, बिकॉज functions they use a type of the like class, right. If I print here type add, then it understands and
gives us output, for example, class function, right? Here they give. So next comes is parameters. Parameters, in that we have the values, right? So for values are nothing but the arguments. So arguments are two types. Arguments are two types. One is positional and second is keyword. So यहाँ पर एक फंक्शन लिया है, यहाँ पर पावर, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स बेस एंड एक्सपोनेंट, देन हम जो बेस है डबल स्टार एक्सपोनेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, राइट? क्यूब निकाल रहे हैं, फिर स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर, राइट? अगर हमने पहला बेस लिया फिर एक्सपोनेंट लिया तो क्यूब होगा, अगर पहला एक्सपोनेंट लिया फिर बेस लिया तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा, राइट? तो यहाँ पर ऑर्डर पे डिपेंड करता है। कीवर्ड में ऐसे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, राइट? सो आप चाहे आप बेस पहला लिखो या फिर एक्सपोनेंट पहला लिखो, वो क्या करता है, वो वैल्यूज को असाइन करता है डायरेक्टली, लाइक सपोज हियर गिवन, राइट? So directly assigning the value to the parameters. So mixed positional, here mixed जो है हमारे पास, like positional first and then keyword. तो यहाँ पर हमने print, फिर हमने function के अंदर ये किया है, then to this is positional and then exponent, right? It comes 8. So next is default parameters. In this there are specific default parameters, means here is example function, then parameters, this is positional one and this is keyword one, right? Here let me change the color, this is keyword and this is positional. So in this we have to return by the f string. Okay, this is I'll talk about it. So there are basically three types of strings. First one is string concatenation, and second is format string, and third the f string. Okay, we'll talk about in detail in next. So while doing the programs, then now we'll cover this one, right? So अगर हम बात करें यहाँ पर print क्या है, pop, then it is name, then here greeting, right? So here mutable default trap tracing. So हमारे पास मिस्टेक क्या होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू या फिर नंबर ऐड करते हैं तो हमें अपेंड की ज़रूरत पड़ती है, अपेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है अपेंड ऐड आइटम, that is here our positional arguments, parameters, item, items, this is empty, right? So items dot append, then item, return items. So ये जो यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर हमको
नन लेना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर नन लेना चाहिए था, नन। वाई नन? बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा है कि जो हमने एम्प्टी दिखाया है यहाँ पर, एम्प्टी लिस्ट लिया है यहाँ पर, तो एक्चुअल में वहाँ पर एरर दिखाएगा, राइट। हम अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को दे रहे हैं तो यहाँ पर एम्प्टी इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर वो रॉन्ग दिखाएगा, एरर दिखाएगा, राइट। फॉर दैट रीज़न यहाँ पर करेक्ट using is none, right? Use of none. Then if items is none, then we have to separately assign it for the items that is empty list. Then we can return it. So next come is arguments, star arguments and keyword arguments, variable, right? So in this def sum all star numbers, बेसिकली स्टार जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्या करते हैं कि जो ट्यूपल है उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, राइट। और जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो डिक्शनरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं, दैट इज की वैल्यू पेयर्स। सो द वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो कि स्टार नंबर से नोट करते हैं हम इनको, तो ये क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर इनकी जो सम है वो प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज कीवर्ड, वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। देन सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, इसके बाद यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये रैप अप होते हैं, राइट। फॉर की वैल्यू इन कीवर्ड्स डॉट आइटम्स, राइट। प्रिंट key value, that is pairs, these are pairs, will take in the curly braces, this will take curly braces, curly braces. Then we have keyword, here assigning, then age, then city, so it will run properly. So next term is unpacking arguments. So we have to, for the unpacking we are using variable arguments, right, variable positional arguments. So it will unpack the lists. Then unpacking into function, so हम ऐड कर रहे हैं तीनों को, फिर रिटर्न है यहाँ पर, then the data, that is numbers, then it will add it, right. In dictionary unpacking, here also we are keeping the values to it, like printing the values, right. So info, that is there is dictionary, and is another function defined here, like name, age, then it is key value pair, right. So we have to call it now, right, by using show double star info, then it will print Bob is 25. So the next is LAGB rule. Then what is this LAGB rule? What is variable scope? Variable scope is nothing but the understanding of the variable, the scope of the variable, that how far, how long it goes, which entities we can add another increased entity, right, increasing the entities. So for that we are to access the elements, जब भी हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तब हम
दो लेते स्कोप, एक है ग्लोबल, एक है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, राइट। सो दोनों यहाँ पर दिया है फंक्शन बॉडी, enclosing nested functions, global module level, built-in Python built-ins। So यहाँ पर scope example लिया है x is equals to 10, then def outer, we define the function, then enclosing scope it is y is equals to 20, then the inner one, that is z is equals to 30, it is local scope. So three types there are. One is global, one is enclosing, one is local. So all three we can print. Okay. So and then last we can call them. So here is an example. Count we can assign the count is equals to 0 here. Then we have function. फिर हम जो है ग्लोबल वेरिएबल ले रहे हैं, राइट। ग्लोबल दिस हम ग्लोबल वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसको एक्सेस करना है, राइट। इसको दिस इज वन ग्लोबल, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल दोबारा से कॉल करें, राइट। सो वी कैन इंक्रीमेंट काउंट, देन वी कैन टेक अनदर आउटर फंक्शन, यहाँ पर उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फिर इनर फंक्शन दैट इज नॉन लोकल वैल्यू, then we can increase the output, so then we can call it, so the output will be 101. Why? Because we are incrementing the value by 1, right? So in that case the output 101, right? For this increment global, it if we print the count, then it will print only 1, right? If we call this inner function, then it will print 101. एडवांस फंक्शंस की तरफ बढ़ने के पहले हम पाइथन प्रोग्राम देखेंगे, जो एक एग्जांपल है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें जो है एक हाई स्कोर स्टोर करना है यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल हाई स्कोर, और फिर यूजर्स को अलाउ करना है न्यू स्कोर, फिर अपडेट स्कोर, राइट। अगर न्यू स्कोर हायर है तो फिर क्या कर दो, वही जो है हमारा हाई स्कोर होगा, राइट। सो इसीलिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेक करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए हाई स्कोर, राइट। तो इसीलिए हम ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर लूप्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो चलो फिर बनाते हैं, राइट, सिंपल प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर ये हाई स्कोर वेरिएबल लेते हैं, फिर फंक्शन डिफाइन करते हैं, राइट, डेफ।
update, that is new score, right? New score आएगा ना ये, यहाँ पर जो है कॉलन आएगा, राइट? तो अभी हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, इसके अंदर हमने पैरामीटर डाल दिया है जो न्यू स्कोर है हमारा, राइट? तो इसके बाद क्या होगा कि हम ग्लोबल कीवर्ड को लेंगे, राइट? ग्लोबल, ग्लोबल हाई स्कोर, फिर न्यू स्कोर इफ हायर देन हाई स्कोर, न्यू स्कोर is equals to high score rate. Then we have to print the high score rate, new high score. So we can use here app string, right? So for that, here we have new high score. And curly braces in that else int the current high score rate. Remain that is curly braces high score. So now we have to use loops. हम loops का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम न्यू स्कोर को एंटर कर पाए, राइट? सो इसीलिए वाइल ट्रू score input score we can read is equals to input enter the new score.
इफ न्यू स्कोर, अगर न्यू स्कोर से छोटा है तो फिर क्या कर दो, प्रोग्राम को एग्जिट कर दो, राइट। So if input score, you can say input score dot lower is equals to exit, right. Print exiting final score, final high score. That is high score rate. Then break. Else new score is equals to int, in bracket we can say input score. Then we have to update high score rate. That we can put the input score, new score rate. So if you try to run it, then yes, ran successfully. So it was small program that you saw. अगर इसको इस कोड को समझे तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है हाई स्कोर, जो मेंटेन कर रहा है रेट, वी कैन मेंटेन। सो अगर हमें न्यू स्कोर को अगर डालना है तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। फिर अगर हमें हाई स्कोर को मॉडिफाई करना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो फिर कंपैरिजन होगा न्यू स्कोर और हाई स्कोर का। अगर वो न्यू स्कोर हाई स्कोर से ज़्यादा होगा तो फिर अपडेट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर फंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं इस प्रोग्राम में। तो बस जो है और प्रोग्राम्स देखेंगे हम, राइट। सो इस क्लास में मैं यहीं पर समाप्ति करते हैं, राइट। सो थैंक यू।